ये मसल रेगुलर ट्विच हो रहा है अभी भी, दिख रहा है? बॉडी अपनी पूरी कोशिश कर रही है ताकि इस पार्ट को ब्रेक ना किया जाए। Relax, easy. Oh. Easy. Easy. Hey, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, दिस इज हिमांशु शर्मा। और आज मैं जा रहा हूँ अपनी थेरेपी कराने के लिए। काफ़ी लंबा टाइम हो गया क्योंकि मुझे इंजरी हो गई थी, तो इंजरी की वजह से भी मैं थेरेपी नहीं करा रहा था। सो अभी मैं 3 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है और अभी बज चुके हैं 2। मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। सो अभी जल्दी से मैं रेडी होता हूँ, निकलता हूँ और आपको सीधा वहीं मिलता हूँ। यार वीडियो बहुत लंबी होने वाली है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपको बहुत डीपली देखनी पड़ेगी, शांति से बैठ के आराम से आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। एक एक चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि कौन सी मसल पे वो कैसे वर्क कर रहा है, कौन सी थेरेपी मुझे दे रहा है, किस लिए दे रहा है। एंड बीच बीच में गाइज वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि क्यों हम ये थेरेपी करते हैं, क्यों, क्या इस मसल पे इसका क्या बेनिफिट है। सो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएगा। सो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनना और पूरी वीडियो को देखना, तभी आपको पता लगेगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट क्या कर सकते हैं, दिखाना तो पड़ेगा पूरी वीडियो को। तो चलते हैं, जल्दी पहुँचते हैं, मिलते हैं जल्दी आपको। मीट मिस्टर शिवांश और ये गुड बस एकदम ठीक। सो बहुत ही स्पेशलिस्ट एंड इन्हें बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत लंबे टाइम से इस फील्ड के अंदर है एंड काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है कि थेरेपी के बाद में। और मैं काफ़ी टाइम से थेरेपिस्ट को ढूंढ रहा था, कायरो वगैरह की, कोई ऐसा मिले मुझे फिटनेस की या फिर उन्हें पता हो कि किसी बॉडी बिल्डर या पावर लिफ्टर को कब कैसे क्या थेरेपी की ज़रूरत होती है। सो मैं एकदम सही जगह आया। मैंने सोशल मीडिया के थ्रू इन्हें देखा था, बट ये प्रमोशन के लिए मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, अपना खुद का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना यहाँ आने के बाद बोल रहा हूँ। कभी आप सोचो कि लाइक मैं प्रमोट करने के लिए ऐसे कुछ बोल रहा हूँ या वो मुझे कोई पैसे वगैरह दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस रहा है यहाँ आने के बाद में कि मुझे बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और बहुत ही थेरेपी के बाद में बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो में कि वो दिखाएंगे आपको कौन कौन सी थेरेपीज हम करते हैं, कब किस कौन सी थेरेपी की ज़रूरत होती है, वो सब आप मिस्टर शिवांश खुद से बताएंगे। बिल्कुल। सो अभी आप लोग देखेंगे, हम सेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं इनका। एंड ये जो फ्रंट का लैग का पोज होता है किसी को वो देखिए, शोल्डर कितने बैक हो सकते हैं ऐसे इस पोजीशन में, शोल्डर को कितना पीछे लिया जा सकता है, वैसे नहीं करना। हाँ, अब सर्च करें, अब सर्च ऐसा कुछ लगता है कि किसी पर्टिकुलर शोल्डर से स्ट्रेंथ ज़्यादा निकल रहा है, किसी कम निकल रहा है, कौन सी इससे ज़्यादा राइट से ज़्यादा? लेकिन अभी कुछ टाइम से मुझे यहाँ पे ना पड़ता है। मैं जैसे बाइसेप्स कर्ल लगाता हूँ ना, इसे बाइसेप्स कर्ल तो अगर मैं उसको टच भी कर रहा हूँ ना, तब तो ये फाइबर फील होगा, ये वाला हाँ ये वाला स्कार टिश्यू का मुझे फील पड़ेगा। यहीं पेन होता है। ठीक है, तो मेजर जिसमें हम काम करने वाले हैं, आपके लेग्स को तुम देखूंगा इसके बाद में। पहले तो चेस्ट पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, बिकॉज चेस्ट की यूजली वाली फाइबर क्लैविकुलर हेड्स को बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर पार्ट। इसको रिलीज अगर कर देंगे ना, तो हमें स्टार्टिश फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, डायरेक्ट पता चल रहा है उसका भी ब्लड सर्कुलेशन ऐसे में। इसको रिलीज करने के बाद आपकी टॉप अच्छा से अच्छे से निकलता है। जब मैं आपको फ्रंट का पोज कर रहा था, ये वाला पोज अच्छे से निकल के आएगा। एंड बैक ट्रैप्स SCM, लेफ्ट साइड के न्यूरल सिस्टम पे हम काम करेंगे थोड़ा सा। आप बता रहे ना कि लेफ्ट से थोड़ा सा आपको कम है, उसको स्टिमुलेट करेंगे थोड़ा सा सिस्टम को।
लास्ट में स्पाइन पे काम करेंगे, जहाँ पे स्पाइन को थोड़ा एडजस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्डियो। लोग लेग्स मान लेग्स को चिन करके चिन करेंगे, लेग्स करेंगे ऊपर देखो, पैर ड्रॉप ऊपर, लेग्स पैर ड्रॉप है दाई बीच में क्या करते हैं उसको फेस अप कोशिश वहाँ सामने खड़ा हो जाओ। easy, easy, breathe in, out, easy, breathe out। ट्रिगर पॉइंट की वजह से अगर कोई ऐसा बन जाता है ना, तो क्या करेगा, आसपास के मसल्स के अंदर टेंशन क्रिएट करता है वो, और टेंशन जैसे क्रिएट हो जाएगी उसके बाद में सपोज इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ वो बना आपका ट्रिगर पॉइंट, तो यहाँ से स्पैन को हल्का हल्का पुल करना शुरू कर दिया। तो अब हम लोग मायोफैशियल लाइन में जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी स्कार टिश्यू फॉर्मेशंस हुई हैं, उन सबको ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रासिंग टेक्निक। Breathe out। So, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पेटिकियाज हैं, ये स्टेगनेंट बढ़ता है इस पर्टिकुलर एरिया में, हम इसको फाइबर्स को ब्रेक करके उसको ब्लड को बाहर निकालते हैं।
about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. 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 About to turn it on. Go, 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 go. We about to turn it on.
You can't force me now. Awakening is clear. I could show you how. I could show you how to fight them. I could show you how to defeat them now. Easy. नहीं नहीं कभी तो करिए अभी कभी बस इजी रिलैक्स ब्रीद इन ब्रीद आउट फोकस ऑन योर ब्रेथ रिलैक्स बस इजी 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 ज़्यादा पेन हो रहा है अभी भी? एक्यूपंक्चर। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे क्योंकि लेफ्ट साइड की जो बॉडी है ना हमने बताया था, तो इसके पूरे पार्ट को जहाँ जहाँ पे चीज स्टेग्नेशन है, जहाँ पे न्यूरल इम्पेयरमेंट है, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एक्यूपंक्चर का यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ब्रेन से जो सिग्नल आ रहे हैं ना वो प्रॉपर पहुँच पाएंगे उस पार्ट तक। तो हो गया वो क्या वहाँ हो गया। So right, so right, so right. I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me whip it up. I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging me, go and come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. It feels right. आपके ट्रैप्स ओवर एक्टिव है? आपको ऐसा लगता है कि ट्रैप्स सबसे पहले टाइट हो जाते हैं जैसे काउंटर बैक होते हैं?
रेक्टल साइड में काफ़ी मेजर डैमेज है इसमें पंच में। Easy. Breathe in, breathe out. Good. छोड़ दो। Making this too hard, and I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We're nothing more than dust. You search but you stay lost. We're reaching for the stars. We're making this too hard, and I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Multiple trigger points. Sure. Keep breathing. Sure. Keep breathing. Oh. May wifi lगा po आप? क्या हो रहा है? लगी तो है ही ना अभी। साइकोलॉजिकल जो होता है ना, इजी बस इसको फाइबर ब्रेक हो रहे हैं, दैट्स इट।
छोड़ो। Breathe in, breathe out. छोड़ो ग्लास को, बिल्कुल गला छोड़ो। फिर से छोड़ो ग्लास को, बस यहाँ का है हल्का सा। माइंड रखना है, थोड़ा सा नेचर में करने वाला लाइट रखना। एक ही पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, छोड़ दो पर रिलैक्स। दर्द होता है फोन में I see blood through ice covered in age. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.
ड्रॉसलिंग्स आपको टूथ से फील हो रहे हो ना? ऑलमोस्ट डन। 1 मिनट और लगेगा मैक्सिमम। Why can't you just let me in my way to bleed? I live inside my own world of make-believe. काम नहीं कर रहे नीचे के फाइबर की भी। ये जो पॉइंट है ना इसके बिलो, इस पर्टिकुलर बैंड के अंदर, वो आप कब से करेंगे? अब इसके बाद करेंगे। हाँ काफ़ी हो रहा होगा। इजी छोटो। Oh no no no. कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। ये मसल रेगुलर ट्विच हो रहा है बीच दिख रहा है? बॉडी अपनी पूरी कोशिश कर रही है ताकि इस पार्ट को ब्रेक ना किया जाए। रिलैक्स 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 रिलैक्स। Oh दिख रहा है? no. No, it's fine. छोड़ो बस। Relax, easy. Relax. छोड़ दो। अब तो हो चुका जो होना था यहाँ पे। देख जिस पर्टिकुलर अभी पेन की बात कर रहे थे ना, ये वाला जो पूरा फाइबर का एक बैंड आ रहा है यहाँ से, इस वाले पॉइंट पे इतना जुड़ा हुआ था कि वो नीचे नहीं जा रहा था कुछ। उसको ब्रेक किया है यहाँ से, इस जगह से नहीं रहेगी। छोड़ दो। On your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You break your back, you तुम लग से कैसे फील कर रहे हो? सर दर्द हो बस। एंटिसिपेशन मारता हमेशा, पेन नहीं मारता। पूरे हिप को मोबिलाइज कर रहे हैं इस टाइम पे हम लोग फिंगर में। देखो पेल्विक जोन है ना पूरा, ये पूरा मोबिलाइज होता है। छोड़ दो बस। इजी, कीप ब्रीदिंग, सामने रखना। लास्ट टाइम ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद आउट। इजी इजी इजी।
आपके इस साइड का जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना वो हल्का सा वीक पड़ रहा है कंपेयर टू दिस साइड, ठीक है। तो जस्ट टू बैलेंस इट आउट यूज़ कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा लेना देना आपके वात का नाम सुना होगा आपने, आयुर्वेद में बोलते हैं वात पित्त का, वात से जो बॉडी की एयर एलिमेंट है ना उसके ऊपर वर्क कर रहा है सर। इस केस में थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी पड़ेगी, ठीक है। ट्राई करोगे डीप ब्रेथ। तो इस टाइम पे काम करें मैं SCM के ऊपर, बहुत ज़्यादा हो रहा होगा ना, यस। लंबे लंबे सांस, जितना लंबा सांस उतना लंबा ब्रीथ। So easy, breathe out. Relax. Easy, easy. Oh. ये लास्ट कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। लंबे सांस। ओह नो, इजी, कीप ब्रीदिंग। डाउन। ये बोलो तो ही लेट जाओ। ओ उल्टे लेट जाओ।
डन कर। कैसा लग रहा है? रिलैक्स रिलैक्स लग रहा है? नींद आ रही है। अगर आपको नींद आ रही है ना, मतलब रिलैक्सेशन का मैक्सिमम जो लेवल होता है ना, वो नींद ही होता है। ठीक है? अगर आपको डायरेक्ट नींद आ रही है, इसका मतलब बॉडी बहुत डीप लेवल पे ये रीडिंग प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए जब भी आप करें ना, तो जस्ट फॉर 24 आवर्स 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। नो फिजिकल एक्टिविटी अगले 24 घंटे के लिए। ठीक है? पानी अच्छा पीना, ऐसा कोई भी खाना जो लंबा टाइम लेता है पचने में। हम नहीं चाहते कि हमारा सारा ब्लड पेट की डाइजेशन प्रोसेस में लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो रिकवरी कर पाए, है ना? लाइट सिस्टम में लाइट फूड लाइट फूड। तो ब्रो, ऐसे बहुत सारे एथलीट मैंने देखे हैं जिनके छोटी छोटी इंजरीज की वजह से कैरियर खत्म हो गया। बेसिकली तो है ना? बट इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है। रिवाइव इस टाइम इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है जो फिजिकल थेरेपिस्ट को इंट्रोड्यूस करा इंडियन मार्केट के अंदर, राइट? इंटरनेशनल एथलीट सभी फिजिकल थेरेपिस्ट वीकली लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि उस लेवल तक की फिजिक है, उस लेवल की परफॉर्मेंस के लिए दे नीड ऑल दोस इक्विपमेंट्स, ऑल दोस, राइट? सो आप हमारे भाई हैं, थैंक यू। इनका से थेरेपी सेशन हुआ है? थिंग सर, या प्लीज आप प्लीज एक बार एड्रेस बता दो लोगों को, क्योंकि मुझसे पूछने वाले हैं आप कहाँ आपका क्लिनिक है, सेक्टर 42, सो पूरा आप एक बार एड्रेस बता दीजिए। सो इस 235 सेक्टर 42 और लिंक आप उसमें डाल दीजिए। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी सर को फॉलो करते हैं, वो भी मैं रिवाइव एडवांस फिजिकल थेरेपी सिस्टम, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।